Hello and welcome to EduGyan. Let's crack OPSC. So, dear students, in the previous class, we have already discussed what is Constitution, what is written Constitution, what is unwritten Constitution. So, that was the introduction class. Today, we will discuss or we will learn about making up the Indian Constitution. Okay, and this is the summary of the Lakshmikant. This is the summary of the M. Lakshmikant. So let's start the lecture. So before starting the lecture, I would like to request you, please watch this lecture up to the end. If you like this, then like it, share it, and subscribe. So, making up the Indian Constitution. Now I'm going to write some years: 1934, 1935, 1938, 1940, 1942, and finally 1946. तामाने मु एई जो सु डेट लिखली 1934, 1935, 1938, 1940, 1942, 1944 कि भारत पाई आम इंडिया पाई गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो आवश्यकता अछि सेटा आरंभ होइतिला 1934 तो 1934 रे जी आपनकर एम एन रॉय ओके एम एन रॉय फर्स्ट टाइम से डिमांड करथिले कि गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया पे तैयारी करे ओके देन 1935 रे आपनकर आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से मध्य फर्स्ट टाइम डिमांड करथिला कि गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो देन 1938 रे जवाहरलाल नेहरू से मध्य डिक्लेयर करथिले कि when India will free, the free India must be framed by a constituent assembly and whose members are to be elected based on the adult franchise, universal adult franchise. ये होची जवाहरलाल नेहरू कर व्यू तला देन 1940 रे जो अगस्त ऑफर 1940 रे अगस्त ऑफर 1942 रे जो क्रिप्स मिशन सार स्टाफर्ड क्रिप्स ओके से मध्य गोटे प्रपोजल देथिले टू ड्राफ्ट टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 आफ्टर वर्ल्ड वॉर सो फाइनली 1946 रे कोन हैला कि आपण जो कैबिनेट मिशन आस्थिला तो कैबिनेट मिशन अनुसाई भारत रे हमरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी हैला ओके तो सेउटु सुरा देते प्रकार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अच्छा who is the person M N Roy अच्छा एक्चुअली मुस्लिम लीग कौन करथिला जो 1942 रो जो क्रिप्स मिशन जो प्रस्ताव देथिला मुस्लिम लीग ताको प्रपोजल को रिजेक्ट कर देला काहे कि ना मुस्लिम लीग को दरकार थिला कोन ना टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मुस्लिम तो थिला कोन इंडिया टू सेपरेट है कि पाकिस्तान तेरे करिया पई एवं सेमानक पई आउ उठे नुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओके फाइनली 1946 रे कहला कैबिनेट मिशन आसिला तो कैबिनेट मिशन लो आईडिया थला कि टू मेक ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओके तो एठी बोथ आईएनसी एंड मुस्लिम लीग तो जहां आपनकर कैबिनेट मिशन लो तार जा रूल्स थिला बा तार जहां प्रस्ताव थिला तो सेतरे बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दिजन राजी सो फाइनली in November 1946
Constituent Assembly was constituted under the scheme forwarded by the Cabinet Mission Plan. So finally, November 1946 रे Cabinet Mission Plan अनुजाई हमरो Constituent Assembly constitute करा गला. Okay, बुझा पड़ला. Is it clear? Again, I am repeating, guys. 1934, M.N. Roy demanded for the Constituent Assembly. 1935, INC also demanded for the Constituent Assembly. 1938, Jawaharlal Nehru also demanded for the Constituent Assembly. 1940, August Offer. 1942, Cripps Mission. Okay, and 1942 जो क्रिप्स मिशन जो परामर्श देथिला ताको मुस्लिम लीग that rejected it. Okay, काहे ना मुस्लिम लीग was demanded for the two separate constituent assembly, but finally in 1946 both INC and Muslim League they both agreed on the proposal of the cabinet mission, and finally in November 1946 the Constituent Assembly was constituted under the formula by the cabinet mission. Okay, is it clear? तो सही से लिखा है now. So just look here, this is the Constituent Assembly. This is the Constituent Assembly. एम सब मेम्बर मैंने बसती ये सभापति बसती लॉयर्स मैंने बसती. ओके, तो डिबेट डिस्कशन माध्यम रूल्स तैयारी करा. तो कौन लिखाई कैबिनेट मिशन प्लान प्रोविजन द फॉलोइंग स्कीम्स. कौन सब स्कीम थिला देखो. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो टोटल स्ट्रेंथ थिला 389. ओके, टोटल स्ट्रेंथ के थिला 389. तो 389 लू 296 सीट्स कोड था आपनकर ना ब्रिटिश इंडिया. ये आपनकर ब्रिटिश इंडिया 93 सीट्स 93 सीट्स आपण कोडथिला आपनकर ना प्रिंसली स्टेट. प्रिंसली स्टेट्स बुझाउछि. टोटल सीट 389. ता भितरु 296 सीट थिला ब्रिटिश इंडिया रु जोटा हमर को इलेक्शन हो डायरेक्ट इलेक्शन हो इलेक्टेड मेंबर्स मन आसीबे. आउ 93 सीट थिला प्रिंसली स्टेट्स मनकरु देशी राज्य मनकरु. एठी कोन आसे सब नॉमिनेट हे गयस. एठी इलेक्शन हो बने कम नॉमिनेशन हो. क्लियर ना. ए 296 सीट जो थिला टोटल आपनकर ब्रिटिश इंडिया रु ता भितरु एमि थिला 292 प्लस 4 292 सीट थिला आपनकर कोटू ना 11 गवर्नर्स प्रोविजन 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस. ओके, आ ये जो 4 सीट्स थिला आपनकर कोटी ना 4 चीफ कमिश्नर्स 4 चीफ commissioners provinces. Matter clear? Again I am going to repeat, students. Total strength of the Constituent Assembly was 389. Out of 389, 296 seats were from the British India, and all these 296 seats were what? Direct election.
and 93 seats were from the princely states. These seats were the nominated seats. Okay. Then again, out of 296 seats, 292 seats from 11 governors provinces. जो 11टा गवर्नर प्रोविंस थिला एटो आस्थिला आउटसाइड टा कोड आस्थिला जो चारोटी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस थिला एटो आस्थिला क्लियर होला ओके देन ए जो सीट रो एलोकेशन हेइतिला केमति हेइतिला ना 1 seat was allocated to every million people. प्रत्येक 1 million people पाई 1 million people पाई 1 seats. तो सही हो जाओ एलोकेट हेइतिला मींस 10 लाख 1 means 10 लाख 10 लाख लोक मानक पाई गोटे सीट थिला ओके अच्छा सीट जो एलोकेट करा हेइतिला ब्रिटिश प्रोविंस रे तो जनरली सीटा को मान भितर सीटा डिवाइड होता ना एमंग द मुस्लिम सिख जनरल्स ओके मुस्लिम मान भितर सिख्स मान भितर जनरल्स आ हिंदू मध्य आसुच्च इन प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन से लोक संख्यार अनुपात को लेकिन क्लियर नेक्स्ट देखो the representatives of each community were to be elected by the members of that community. Okay, तो प्रत्येक कम्युनिटी जो रिप्रेजेंटेटिव होतले तो सेमाने लोक मानक द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड हेके आस्तुले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट जो माने प्रिंसली स्टेट रो कोन थिला ना रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट तो प्रिंसली स्टेट मानकर जे हेड थिबे तो सीए ताको स्टेट रो जण को नॉमिनेट करथिले ओके अच्छा सो एबे इलेक्शन एबे कोन आसरो इलेक्शन हम तो टोटल 296 सीट रो एबे इलेक्शन ओके एंड इलेक्शन रिजल्ट इलेक्शन केबे हला ना जुलाई अगस्त 1946 रे हला रिजल्ट कौन थिला देखंतु आर रिजल्ट्स कौन थिला आईएनसी इंडिया नेशनल कांग्रेस केते पाइथिला 208 सीट्स पाइथिला ओके मुस्लिम लीग केते पाइथिला 73 सीट्स आउ 15 इंडिपेंडेंट होथले इंडिपेंडेंट नंबर केते पाइले 15 सीट्स okay independents got 15 seats clear la out hoila 93 seats that was allocated for the princely state okay acha ethi gote jinsa hochi महात्मा गांधी was not the member of the constituent assembly तो ये constituent assembly रे महात्मा गांधी तार मेंबर नथिले ये जिनस मन रखियो ओके महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर नथिले ए जन सब मन रखे पड़े देखंतु वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फर्स्ट मीटिंग के व्यवस्था ना डिसेंबर 9 1946 केबे December 9 1946 but unfortunately मुस्लिम लीग ताको बॉयकॉट करता से मीटिंग को काई करथिला बिकॉज़ तार डिमांड कोन थिला सेपरेट स्टेट फॉर द पाकिस्तान तले ओनली जो 207 मेंबर थिले ओके तो 207 मेंबर्स माने फर्स्ट मीटिंग रे जॉइन करथिले फर्स्ट मीटिंग रे जॉइन करथिले ते ओनली 207 काई करा मुस्लिम लीग ताको बॉयकॉट करथिले अच्छा तो तार प्रथम प्रेसिडेंट किए थे टेम्पररी बेसिस रे किए थे इंटरव्यू रे ना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थिले होची तार टेम्पररी प्रेसिडेंट थिले ओके अच्छा तापर की हेले ताको परे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कराला प्रेसिडेंट हिसाब रे ओके
एवं दी जन थिले होची वाइस प्रेसिडेंट किए के थिले एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। एच.सी. मुखर्जी आउ वी.टी. कृष्णमाचारी ये दुई जन वाइस प्रेसिडेंट थिले। ओके बुझा पड़छ कोन तो ताहले फर्स्ट मीटिंग के बेइतला डिसेंबर 9 1946 रे मुस्लिम लीग मीटिंग को बॉयकॉट करथिला काहे कि ना मुस्लिम लीग रो डिमांड थिला कि पूरा सेपरेट पाकिस्तान सेपरेट स्टेट पाकिस्तान तो केवल 207 मेंबर फर्स्ट मीटिंग रे अटेंड करथिले एवं इंटरिम बा अपन जो टेम्पररी प्रेसिडेंट फर्स्ट के थिले ना डॉक्टर सचिवानंद सिन्हा थिले एवं तापरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कराला एज ए प्रेसिडेंट हिसाब रे आउ दुई नंबर कोन थिला बरो वाइस प्रेसिडेंट थिले के थिले वी.टी. कृष्णमाचारी आउ के थिले आपनकर ना एच.सी. मुखर्जी। देन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस डिसेंबर 13 1946 डिसेंबर 13 1946 रे जवाहरलाल नेहरू से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन घोषणा करथिले कोठी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एवं जोटा की हमर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्ट कला केबे ना जनवरी 22 1947 ले से घोषणा करथिले डिसेंबर 13 1946 रे एवं ताकू जनवरी 22 1947 रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा ग्रहण कराला कोटा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा तो नेक्स्ट क्लास में पढ़िवा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थिला ताको हम डिस्कशन करबा एवं हम लेसन को आगु बढ़ाई। तो आशा करे आज लेक्चर टी आपण मान को मन को बहुत पसंद हितबो बा जदि आपण को नॉलेज मिलि थाए डेफिनेटली लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब मध्ये करिवे ताकि एमि लेक्चर मु प्रत्येक दिन आपण पाइ मु आनि पारि। सो आज पैति की जय हिंद जय जगन्नाथ।